हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों को जो आपकी जनरेशन है, आज की जनरेशन है, उनको डेफ़िनेटली यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म का थैंकफुल होना चाहिए कि आज आपको क्वालिटी कंटेंट्स फ्री में अवेलेबल हो पा रहे हैं, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जब आप चाहें, जब आप देख सकते हैं, जब आप सुबह फ्री हों, दोपहर में फ्री हों, शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, राइट? हमारे टाइम में ये सारी सुविधाएँ नहीं थी। उस टाइम पे क्या है कि आज से 5 साल, 10 साल पहले भी ये प्रॉब्लम थी कि क्वालिटी कंटेंट्स अवेलेबल नहीं थे किसी भी प्राइस पे। और अगर अवेलेबल भी थे तो उनकी सुविधा के अनुसार उनकी क्लास के टाइम पे उनकी जगह पे जाना पड़ता था, स्टडी करना पड़ता था, राइट? और वो भी बिल्कुल लिमिटेड सोर्स था, उसको रिवाइज करने का, कोई मेमोराइज करने का कोई और सोर्स नहीं था। बेसिकली अब सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो यंग जनरेशन है आज की, ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठा के आगे से आगे बढ़ सके, राइट? देखिए, वेबस्टर की पूरी डिक्शनरी को रिवाइज करने में मुझे 2 से ढाई साल का टाइम लगा था 1992 में। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसके जो सिलेक्टेड वर्ड्स थे, जो 95 वर्ड्स ऐसे परसेंट वर्ड्स ऐसे थे जो मैंने कभी यूज ही नहीं किए अपनी लाइफ में, इन माय 30 इयर्स एक्सपीरियंस, राइट? जो मैंने कभी यूज ही नहीं किए, उनको मैंने स्ट्राइक आउट किया है। मतलब अपनी जो वोकेबलरी है उसमें मैं केवल वो 5% वर्ड्स ही डाल रहा हूं, जो अगर आप मेमोराइज कर लें, राइट, और जिनको ढंग से आप जिन पे कमांड कर लें, तो योर इंग्लिश इज गोइंग टू बी सुपर्ब। फाइन। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू शुड नॉट मिस इट आउट। आप में से जो भी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए एंड डोंट जंप वीडियो। जब तक कि आपको एक वीडियो समझ में नहीं आती है, दूसरी वीडियो पे आप जंप मत कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वोकेबलरी। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करना। You should attempt for IAS this year. He is trying to attempt for new business, right? Attend. Attend means shamil hona. I am going to attend in a party tomorrow. I have already attended in this examination. Did you attend the class? Attention. Attention means dhyan. May I have your attention, please? Where is your attention? Please keep your attention in this class if you want to learn something. Attest. Attest means प्रमाणित करना, right? You need to attest all of your documents by any government official. I am putting my attested documents here. For applying this position, you need your all attested documents. Attract. Attract means akarshan. See, Taj Mahal is really a very attractive building. The people who are speaking fluent in English, they always attract me. Bollywood is really a point of attraction. Auction. Auction means nilami. I bought this plot in government auction. I am always waiting for some good auctions. Audible. Audible means sunai dene yogya. Your voice is not audible. I was talking to him, but his voice was not audible. Sometimes, like when we are watching TV, it is not audible properly. Audience. Audience means shrota ya darshak. I request all the audience, whoever is listening me, they should practice these vocabulary exercises very effectively, right? There were a number of audiences when I was performing in on stage. Auspicious. Auspicious means shubh. Diwali is one of the most auspicious festival of Hindus. I don't wait for any auspicious date to start any new thing. I start whenever I wish. Authentic. Authentic माने विश्वसनीय. I always buy electronic goods from authentic shops. Next. Arrange. Arrange means व्यवस्थित करना. You should arrange all of your beddings once you get up in the morning. Arrest. Arrest means गिरफ्तार करना. Many of the culprits have been arrested yesterday because of some bribe case. Arrive. Arrive means पहुंचना. I will be arriving Mumbai tomorrow 10 a.m.
Few of my guests are arriving today at my home. Arrogance means abhiman. We should not have any kind of arrogance because arrogance is sign of failure. I don't like arrogant people. Artificial means banavti. See, I always try to have everything natural. I don't like artificial. Art means kala. When you speak or when you communicate effectively, it's an art actually. Ascend means बढ़ाना, चढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ. I want to ascend my level of communication as soon as possible. Ashamed means sharminda. I was really very ashamed when I found that my dress was torn. Ask means पूछना. Somebody was asking me the address and I explained him. Aspect means pehlu. You will have to see all the aspects of the situation, then only you should decide what you want to do next. Assemble means इकट्ठा होना. We assembled in a hall to discuss on some very important social issues. Assign means सौंपना. Principal has already assigned this task to vice principal. Assist means सहायता करना. I am really happy to assist you. Associate means सहयोग. I want some associates to assist me in this regard. Assume means मान लेना. I'm assuming that tomorrow few guests are coming to my house. Assure means ashvasan. I assure you that I am going to do proper studies, or you can say in another way, I need your assurance that you will finish this task within time. अस्थमा मीन्स दमे की शिकायत होती है ना, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको अस्थमा कहते हैं, राइट. माई ग्रैंड मदर वॉज हैविंग asthmatic problem. अस्थमा इज ए क्योरेबल डिजीज नाउ. क्योरेबल मीन्स जिसका इलाज किया जा सकता है. एटमोस्फेयर मीन्स वातावरण. सी, द एटमोस्फेयर इज वेरी ह्यूमिड टुडे बिकॉज इट इज अबाउट टू रेन, राइट. इसका मतलब हुआ एटमोस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है. ह्यूमिड मतलब जब बारिश होने वाली होती है उस वेदर को कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अबाउट टू रेन, क्योंकि अभी बारिश होने वाली है. अटैच मीन्स जोड़ना, लगाना या जुड़ा हुआ, राइट. लाइक washroom is already attached with the room. Yeah, I am very much attached with my younger brother. Attain means पाना या achieve करना. I want to attain something in my life with my hard work. Next. Anytime means किसी भी समय. You can contact me anytime. They must be arriving here anytime. Appetite means भूख. How much money appetite you have? We should take our meal as per our appetite only. Apology means क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना. He was apologizing me yesterday. Apparatus means उपकरण. There are many apparatus in our laboratory. Few of the apparatus are out of work. Apparel means कपड़े, परिधान. I want to buy some new apparels. This is a nice apparel shop. Applaud means सराहना करना. They all were applauding me when I told them each and everything about communication.
अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना। द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग न्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस हियर इन जयपुर। एप्रिशिएट मीन्स सराहना करना। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट गुड वर्क्स ऑफ अवर किड्स। अप्रोच मीन्स पहुंच, बढ़ना, या दृष्टिकोण को भी कहते हैं अप्रोच। योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इज वेरी गुड। आई एम जस्ट अप्रोचिंग। नेक्स्ट, appropriate means उचित। You will have to take some appropriate steps to recover your health. Approve means मंजूर करना। See, this institution is approved by the government. Approx, देखिए अप्रोक्स और अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम वर्ड होते हैं। इसका मतलब होता है लगभग, राइट। अप्रोक्स इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे जयपुर टू दिल्ली इज अप्रोक्स 300 किलोमीटर, या इट इज अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस। I don't want any argument in this regard. I have seen that she is very argumentative. Arise means उठना या दिखना। See, from where this question has arisen? Arithmetic means अंगणित। See, this is just an arithmetic problem. Arm means भुजा। Arm means भुजा, या arm means हिस्सा भी होता है, राइट। जैसे translation is very important arm of English communication, राइट। आर्मामेंट मीन्स अस्त्र शस्त्र, मतलब जो गोला बारूद वगैरह सब होते हैं, इनको कहते हैं आर्मामेंट। रशिया इज अटैकिंग ऑन यूक्रेन विद बिग आर्मामेंट्स। अराउंड द क्लॉक मीन्स 24 घंटे, मतलब हमेशा। आई कीप थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ट्रेनिंग अराउंड द क्लॉक। तो आई एम सॉरी, देयर इज सम कंफ्यूजन आई फील। Appropriate, around the clock is complete, okay. Symbol assign associate is done, right. Okay guys, that's it for the day, right. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी। इन सारे वर्ड्स को आप बार बार मेमोराइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, राइट। बार बार 3 से 4 बार इनको मेमोराइज कीजिए। और आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं विच आर गोइंग टू चेंज योर कम्युनिकेशन, विच आर गोइंग टू चेंज योर वोकेबलरी, राइट। थैंक्स अ लॉट गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।